स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर रे हमें क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत कंप्लीट करथिले पार्शियल डेरिवेटिव रो एक्सरसाइज रु आउ तीनटा क्वेश्चन बाकी थिला जाको आज रो लेक्चर रे हमें कंप्लीट करि देबा ता परे हमें स्टार्ट करिबा डिफरेंशिएबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा होची क्वेश्चन नंबर 6। fxy equals to x³ minus yq divided by x square plus y square xy is non-zero and 0 when xy is 0. Okay, so we will find the partial differentiation with respect to x and y. तो प्रथमे हमें एठी कोन करिवा, let us compute the partial differentiation with respect to x, that is fx 0 0, which is equals to limit h tends to 0 f h0 minus f 0 0 divided by h, right? So this is equals to केते हबा एटा लिमिट h tends to 0 f h0 रो वैल्यू हम एठी पकेबा hq एटी स्टूडेंट देखंतु h रो वैल्यू हमें एठी x जगह h पकेबा y जगह 0 पकेबा। सो एटा हमर केते हे जिवो hq minus 0q divided by h square plus 0 square, right? Minus f0 0 जोटा होचे 0 divided by h। देखो एटा केते हे जिवो hq limit h tends to 0 hq divided by h square divided by h, अर्थात एठी कहि परिवा लिमिट h tends to 0 एटा केते हे जिवो h upon h which is equal to 1। अच्छा fx 0 0 होची 1। सिमिलरली आपण बाहर करि परिवे एटा को fy टा को बाहर करि परिवे इजीली। आपण कोंतु बाहर करि परिवे ना नहीं fy 0 0 ताहले केते होची लिमिट k tends to 0 f 0 k minus f 0 0 divided by k which is equal to limit k tends to 0 एटा केते हे जो minus kq divided by k square divided by k. So this is equal to limit k tends to 0 minus k divided by k which is equal to -1. Okay, so I am partial differentiation एटी बाहर कर देले fx and fy। तापरे नेक्स्ट एटी हमर कंडीशन स्टूडेंट केते देइछि fxy
is not equal to 0 0. This is the condition given. Okay, so fx is equal to how much? आपको यदि हमें डिफरेंशिएशन करिया स्टूडेंट कारण हम पाखरे fxy एतिक अछि. अच्छा एटा कोची नॉन जीरो आमे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बाहर करले 8.00 रे. एबे हमें यदि ये जो फंक्शन अछि fx ता fxy x क्यू माइनस y क्यू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एटा हम पाखरे अछि तार हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करिबा. ओके कले एटी केते आसीबो 3x स्क्वायर एटी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x क्यू माइनस y क्यू into 2x. Okay, divided by x square plus y square whole square. अर्थात आर वैल्यू एठी आसी जीवो केते 3x square x square plus y square minus 2x x cube minus y cube divided by x square plus y square whole square. एटा आसी गला. अच्छा सिमिलरली fy मध्ये आपण बाहर करि परिबे स्टूडेंट एई भली भाबे fy मध्ये आपण बाहर करि परिबे ताहले हम पाखरे हम आंसर बाहर कर दिले एटी fx और fy. आ गोटे सेकंड वेट रे आ गोटे क्वेश्चन एटी करिवार अछि. fxy is equal to xy divided by x square plus y square root over x square plus y square is non-zero, and here we have 0 when 0 0. Okay, so that is I can say xy is equal to 0 0. Okay, xy is equal to 0 0. तो एठी हमको बाहर कोन करिवार अछि एठी हमको बाहर करिवार अछि पार्शियल डिफरेंशिएशन that is fx so fx 0 0 fx 0 0 जदि बाहर करिवे एठी केते आसीबो लिमिट h tends to 0 f h0 minus 0 divided by h. Okay, so this is equals to limit h tends to 0 by h, which is equals to 0. Similarly fy मध्ये आपण बाहर करि परिबे एठी fy 0 0 which is equals to
0 fx और fy एठी 0 ही हबो स्टूडेंट। अच्छा एठी आमे fx हमें जानी छी कि जो xy हबो xy is not equal or xy is non-zero, so the partial differentiation with respect to x fx xy is equals to y x square plus y square minus xy x upon स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन करूची काहा को एटा को ओके ये जो xy upon x square plus y square रूट ओवर अछि आकु मु विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन एटी करूची सो एटा हिजिबो केते x upon x square plus y square रो रूट ओवर ओके सो डिवाइडेड बाय यदि हम स्क्वायर करिवा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रो एठी होल स्क्वायर करिवा ताहले एटा आसीबो केते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बिकॉज़ रूट ओवर रो यदि हम स्क्वायर करिवा त रूट टा कटि जिवो सो दिस कैन बी रिटन एज एटा केमिति लिखा जाय परियो y जे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एठी करिवा ताहले रूट रूट एठी गुणी हे गले एटा कटि जिवो रहिबो केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होला सो माइनस x square y divided by x square plus y square whole to the power 3/2 एटा केते आसीबो whole to the power आसीबो 3/2 ओके ठीक अछि ताहले आकु सिंप्लीफाई कर दवा एटा गोटे गुणी दवा x square y plus y cube एटी देखंतु y square y cube minus x square y divided by x square plus y square to the power 3/2 अच्छा कटि जिवो एटा कटि गले केते आसीबो एटी देखंतु एटा कटि जिवो x square y minus x square y अर्थात एटी केते रहि जिवो वैल्यू y cube divided by x square plus y square whole to the power 3/2 okay this will be our final answer and सेही भली भाबे आपण fy मध्ये बाहर करिवे सेटा आपण बाहर करिवे fy xy एटा बाहर करिवे ओके आंसर मु अठी कहि दोउची एठी आंसर हबो x³ डिवाइडेड बाय x square plus y square to the power 3/2 so this will be our answer ये आंसर रहिबो हला ताबरे नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा क्वेश्चन नंबर 7 एठी 7 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखंतु fxy is equals to
x square y divided by x fourth plus y square. So xy is non-zero and 0 when xy is equal to 0. Okay, so this is the condition. What do we have to find? We have to find the partial differentiation with respect to x at origin, and एठी हमें एटा भी चूज करिवा कि फंक्शन टा डिसकंटिन्यूअस हो द फंक्शन इज नॉट continuous, but the partial differentiation exists here and equal. So that we have to show. Ready student, आमे first कौन करिवा ना partial differentiation बाहर करिवा fx 0 0. Okay, partial differentiation with respect to 0, that is limit केतेटा हे जो h tends to 0 f h0 minus f 0 0 divided by h. So this is equal to limit h tends to 0 0 by h, which is equal to 0. Okay, and if we find the partial differentiation with respect to y at origin, then we will get the same value here. So I can write limit k tends to 0 f 0 k minus f 0 0 divided by k. So limit k tends to 0 and 0 upon k, which is equals to 0. Okay, so this is 0. Now the partial derivative with respect to x and the partial derivative with respect to y exist at origin and both are equal. And if we found the continuity of the function, हमें check करिवा कि function टा continuous होची कि discontinuous होची, so we have to put here y is equal to mx. हमें एठी कौन put करिया y is equal to mx. So f x mx is equal to x square mx एठी ऊपर केते अछि x square y, right? So x square mx and denominator एठी x fourth plus m square x square y square अछि, so m square x square एठी रहिबो हला. So this is equals to एठी केते हे जो m x cube divided by x square एठी कॉमन पळेबो, x square कॉमन पळे आसिले रही जिवो इन ब्रैकेट रे x square plus m square हला. So this is equals to mx. अच्छा एटा कटि जिवो देखंतु x square x cube एटी कटि गले x रहिबो, तो mx divided by x square plus m square. Okay, x square. अच्छा ये जदि लिमिट x tends to 0 हैला, देन आमे एठी कहि परिबा कि ये टेंस करिवो 0 को, राइट? ये 0 को टेंस करिवो बिकॉज़ एठी वेरिएबल अछि, इट नॉट डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट. अच्छा जदि आमे स्टूडेंट चेक करिवा कि y is equal to x square, if we check y is equal to x square, then what we get is x square, which is equals to x square into x square divided by
x4 plus x square square, which is equals to x4 divided by 2x4. Okay, so this is equals to 1 by 2. This is a constant. ये तो नॉन जीरो होची. इट मीन्स आमे कहि परिबा कि एठी आमे जे y is equal to mx गोटे पाथ नउची ये 0 को टेंस करूची because here we have x, but आमे जदि x y is equal to x square नउचे ताले एठी आमे पाखरे गोटे कांस्टेंट आसी अर्थात 1 by 2 which is नॉन जीरो. अर्थात आमे कहि परिबा कि it is not continuous. So this is not continuous. So this is not continuous. Okay, एटा हमें लिखि परिबा. Now the next question, this is the last question student. एटा हमें करि दबा. Question number 8. एठी पचारछि if fx y is equal to xy रो mod रो root over, find fx 0 0 and fy 0 0. Okay, fx 0 0 and fy 0 0. Now वर्तमान आमे कोन करिबा ना बाहर करिबा fx, the partial differentiation आमे बाहर करिबा at 0 0. Okay, now सहज क्वेश्चन स्टूडेंट एटा. The partial differentiation, that is fx 0 0, which is equal to a limit h tends to 0 f h0 minus f 0 0 divided by h. So this is equals to h0 student हम बाहर करिबा. फर्स्ट इवैल्यूएट करिबा h0 अर्थात this is a floor function, this one is a floor function. तेणु h0 हमें एठी एटा केते ही परिबो. ताले देखंतु आमे जानि छे कि h डॉट 0 इज इक्वल टू 0 ये जानि छे. तेणु जो फ्लोर फंक्शन अच्छी ताको आमे एई भଳି भाबे लिखताउ. देखंतु xy फ्लोर फंक्शन को आमे एई भଳି भाबे लिखताउ. गोटा अछि सीलिंग फंक्शन, गोटा फ्लोर फंक्शन. सीलिंग फंक्शन को आमे एई भଳି भाबे लिखताउ. ओके, एटा होछि सीलिंग फंक्शन, एटा होछि फ्लोर फंक्शन. एटा होछि फ्लोर फंक्शन, एटा होछि सीलिंग फंक्शन. तेणु आमे एठी जेहेतु एटा को फंक्शन अछि स्टूडेंट देखंतु एटा होछि फ्लोर फंक्शन, राइट. एटा तेणु आमे एठी लिखि परिबा h dot 0 which is equal to 0 floor function, that is equal to 0. ताल f h0 is equal to केते गला 0 रो root over which is equals to 0. अर्थात आमे एठी आर वैल्यू को पुट करि परिबा fx 0 0 is equal to limit h tends to 0 0 minus 0 divided by h, which is equal to limit h tends to 0 0 by h, which is equals to again 0. Okay, so this is equals to 0.
Now similarly you can find the partial differentiation with respect to y and that will be also 0. Same pattern रे student आपण बाहर करि परिबे, सेम पैटर्न रे एटा बाहर करि परिबे जोटा हे जिवो केते fy 0 0 is equal to limit k tends to 0 लिखि दउछि similarly limit k tends to 0 0 minus 0 divided by k is equal to limit k tends to 0 0 upon k is equal to 0. So we got the value here. हमें एठी बाहर कर देले केते fx और fy रे वैल्यू. This is a 3 mark question student. It is not a full plate long question. ये 3 mark रो ही question. So एतिक थिला आजरो क्लास हमें पूरा कंप्लीट कर